Proudly, humbly, I wish to say, 27 space missions, only woman founder in the world. We just know astronauts, we know कोई भी NASA. सब्जेक्ट नहीं है ना नहीं, इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब भी जाके आ रहा है. women of your age is again going for an enrollment of DBA. So what made you search for it, ma'am? I think education is the best thing that can happen to you, and when it is coming affordable and online, why not? Thank you, ma'am. Coming from a very long distance, चेन्नई आपके इतने busy schedule के बाद में मतलब आप आ गए यहाँ पे इतना दूर, तो thank you and it's a pleasure for us for hosting you. So it is all about your life, ma'am, your struggles, your hard work, your challenges जो आपने देखे life में. So starting from your early years, ma'am, कहाँ से you started? कैसे आपकी स्कूलिंग रही, क्या पापा आपके करते थे, कहाँ से आप आती हैं मैम? थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने को. पहले बहुत अच्छा लगा, मतलब यू कम टू स्टडी एंड यू आर इनवाइटेड हियर. बोनांजा बन गया. बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू वंस अगेन. वेल, हमारी बचपन आंख खोले थे रामनाथपुरम करके एक छोटा सा टाउन था तमिलनाडु में, और वहाँ के 10 किलोमीटर बाजू में ही अब्दुल कलाम जी का पैदाइशी हुई थी. तो वो हमारे टाउन में पढ़ रहे थे एंड ऑल दैट, बट तब तो किसी को पता नहीं था. उसके बाद पापा हैदराबाद में काम करते थे, तो इसीलिए हमारी पूरी पढ़ाई बचपन पूरी हैदराबाद में थी. एंड स्कूलिंग सारी मतलब स्कूल कैसे ज्वाइन किया, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है. हमारे पापा बहुत नॉर्मल सा, वो ज़माने में ना नॉर्मल ऑफिस जाते हैं, मम्मा घर में रहते हैं. प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में? प्राइवेट जॉब में थे. स्पार्क प्लग्स माइको करके नाम था कंपनी का, जो स्पार्क प्लग्स एंड फ्यूल इंजेक्शंस बनाते थे गाड़ियों का. जर्मन कंपनी था, उनका पूरा सेटअप था, इंडिया का सेटअप पूरा यहाँ पे था हैदराबाद बैंगलोर में. एंड उनको भी मतलब वो डीप डाउन साउथ के थे, विलेज में थे, और वहाँ से गांव से लेके उनको सीधा मतलब हैदराबाद में लग गया था काम, शादी, काम, everything back to back. After you were born? Yeah, I think yes. After I was born, so it was a big jump there. So he moved to Hyderabad. So obviously all of us moved, and he had to put me in school, and that itself was a great episode. I have to tell you, it's a very very close to my heart episode. वहाँ पे 2 schools होते थे, Saint Anne's and Saint Francis, and Saint Anne's होती थी मतलब मर्सिडीज. ओके. एंड सेंट फ्रांसिस, हाँ, सेंट फ्रांसिस वाज रिक्शा, ऑटो, ऐसे टाइप्स, बट द एजुकेशन क्वालिटी एंड एवरीथिंग वाज ऑन पार. एंड दीज वेर सिस्टर्स फ्रॉम इटली, रोमानिया, दे वर रनिंग दिस स्कूल. सो सबको कंपटीशन था कि उस स्कूल में डालना है, बट हम तमिल थे, तो देयर वाज अ तमिल स्कूल. So सब लोग पापा को बोल रहे थे, why aren't you not going to the Tamil school? Why do you want to take her to this school? But पापा बोल रहे थे नहीं, हम लोग तो बहुत पढ़े नहीं. You know, I want my daughter to really go to a good school, and missionary वहाँ पे अंग्रेजी, basic अंग्रेजी तो भी ठीक तरह से आती है, तो I want to put her in that school. So you had to wait all night to get one application form. रात के 12 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक you have to form the queue. So पापा went there, stood there, and correctly 8 बजे जब खुलता है and applications देना शुरू हो जाता है, गेट बंद हो गया, and पापा couldn't get the application. And he was so upset that, you know, ये पहला ही ऐसा हो गया, क्यों ऐसा, and all that. But then the determination that he made, the effort that he made, every day he would go stand in front of the principal. Principal के आगे जाएंगे सुबह को when the school reopens. So he would go there. She used to be like a 6'3". Principal, so beautiful, from Romania. Sister ना वो white वाला dress पहनते हैं, and so curt. So Papa बोलते थे, my daughter, I want one seat. And you know, I was like, no, we don't have any seat. And it's like, बार भेजते थे, 15 दिन बाकी. And finally one day, oh my God, you are just so irritating. Okay, I will do one thing. There is one seat, Papa जा रहे थे LKG के लिए. There is one seat available in grade 1. I don't know if your daughter can make it. Please bring her. If she can do it, we will give her the seat in spite of her underage. So my dad was so excited and everything, and he said, chalo, we'll get this done. But that time they don't prep the child and all that, no, because they don't know what questions and everything. बस उनको मालूम था कि
5 स्टार जब खरीदते थे, इट यूज टू बी मेरे भाई को और मेरे को आधा आधा. Okay. सो उस जमाने पे दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय वन फुल 5 स्टार फॉर बोथ ऑफ देम. सो पापा कह रहे थे मैं ना आपको एक पूरा 5 स्टार दिला दूंगी, आप जो भी क्वेश्चन हो आंसर कर लेना, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू गो टू दिस स्कूल एंड आई नो यू विल बी सो गुड, लुक एट द यूनिफॉर्म एवरीथिंग, इट विल बी वेरी ब्यूटिफुल. वो 4 साल के बच्चे को क्या है 5 स्टार, बस दैट वाज लाइक यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मुझे नेक्स्ट डे मंदिर ले गए पूरा. द फर्स्ट क्वेश्चन सिस्टर्स आके हमें अंदर ले चले गए. पापा वाज आउटसाइड, took me to the principal's room and she looked at me like this and she said like what's your name? My name is Srimati Indira Gandhi. They were all like, what? Indira Gandhi? From where? Out of the blue? I said no, my father listens to a news every day in radio. Every day my name is being told. You know, in Tuta Puta English I kept telling my name comes every day in radio, Srimati Indira Gandhi. So my name is Srimati Indira Gandhi. They all laughed their wits out and, you know, they said, I think this girl will definitely make it somewhere. So it was a huge episode. And for me, it was like one full 5 star that day. So that's how I got admitted into St. Francis. And वहाँ से शुरुआत हुई थी. And there I started playing when I was in my 6th grade, and you know, I started playing sports a lot. And 8th grade jab aaye the, then only you're allowed to go to other schools to play and all that, inter schools and everything. So I was an avid basketball player. I played about 10 nationals. Then I was a state athlete. Okay. So ye sab my principal got transferred when I was in 6th grade. The person who gave me admission. She came for my 10th grade when I was announced the school leader. So she came and she said, oh my God, good judgment I made. She called my father and said, thank God you came in persistently and, you know, you asked me for admission. I'm so proud of your daughter today. And I'm sure she'll make it big for our school. So ऐसे ही हुआ था. Then I wanted to become a doctor. And then ये army का, my father used to speak a lot about armed forces and everything. And वो black and white television बाजू के घर में था. तो we all would go and sit there. January 26th का जो Republic Day parade होता था, every year right from my childhood we used to watch that. So that impression कि you know देश के लिए कुछ करना है तो तुम आर्मी में रहना है. So 10th में ही you opted for science, I mean. Yes. So +1 +2 was pure science. But I thought I'm going to become a doctor. Then army में try करेंगे. I'll become an armed forces doctor. But जब I started going there, the you know the घर का जो माहौल and all that था, मैंने सोचा कि डॉक्टरी करना है तो इतना पैसा लगेगा. ये पढ़ाई तो 10 साल बजट also बहुत है. 10 साल पढ़ना पड़ेगा. पापा को इतना तो हो नहीं सकता है. So what am I trying to do? ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा, NCC कोटा सब है. Let me do commerce. तो प्योर साइंस 12th में हुआ. ये कब हुआ फिर? +1 +2 तो प्योर साइंस. बट उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए हैदराबाद में ना वी हैड द ऑप्शन कि साइंस में हो तो भी आप कॉमर्स ज्वाइन कर सकते हो, ताकि तमिलनाडु एंड ऑल दैट यू डोंट हैव दैट. इफ यू टेक साइंस स्ट्रीम, जिंदगी भर साइंस स्ट्रीम. सो आई टुक कॉमर्स एंड आई डोंट इवन, ये +1 +2 में ही आई नेवर बिन टू कॉलेज. Because I was either in the NCC ground or in the basketball court. So last में principal room जाना पड़ता है, OD लिखवाना पड़ता है, straight away exam. सब लोग 500 pages के record notebook देते थे, हम 50 pages के देते थे. So I knew that I could not do it because my whole focus was on all these things. तो वहाँ से शुरू करके देन बीकॉम तो इमीडिएटली. बट मुझे बीकॉम भी नहीं करना था बिकॉज आई यूज टू लव कुकिंग एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि शेफ कैसे बनते हैं. वहाँ तब तो गूगल नहीं था. इट्स अ मल्टी डायमेंशनल स्टोरी. हां, चेंजेस है और एवरी आफ्टर 2 years it changes. So I said anyways I'm not becoming a doctor. तो मैं शेफ बन जाऊंगी, जहाज में जाऊंगी, and I'll make a lot of money so that my parents will be very happy. So, you know, all these vague ideas used to come like that. तो मैं join भी किया मैंने चेन्नई में in a catering institute. Okay. And 40 boys and I was the only girl. It always happens. जहाँ भी जाती हूँ, it's like
men and I'm the only woman there. वो बचपन से ऐसे ही हो रहा था. And you need to have that creativity. People think bawarchi and they don't really understand the depth of वो जमाने में. So they started pushing my mom. उसका शादी करना है. तू अभी से बावर्ची बना रही है उसको. I mean तेरा सर दिमाग उठ गया क्या? 40 boys. Finish. My mom was रोना. मेरे पापा को बोला bring her back to Hyderabad. Let her not be in Chennai. रोना धोना 3 महीने. I was there. I was going to get the president's gold medal because we had lot of incidences वहाँ पे creativity use करना पड़ता है. And फट मेरे seniors होते थे. They were all like focus पढ़ाई के जरिए they used to learn. But I was cooking right from my 6th grade. So you know the nuances. Practical से कैसा you make all that. तो हमारे professors were very happy and they said इस साल तो इसको मिलना ही है. कहाँ 3 महीने फट. So my mom came. मुझे लेके आ गई थी हैदराबाद वापस बीच में. And she took me to my college. वहाँ पे ना +1 +2 जूनियर कॉलेज होता है और सीनियर कॉलेज होता है. ग्रेजुएशन कंटिन्यूअस ऐसे ही होता है एक ही कॉलेज में. 5 साल का कॉलेज. हाँ 5 साल का ऐसे ही होता है. तो she went to my principal and she said I don't know, you have to give my daughter and all that. तो anyway the principal knows because ओडी के लिए तो रहते हैं हम उधर ही. तो she's like ठीक है okay bring her, we'll give her BCom दे दिया. We had that time some issues in the country and all that. तो कॉलेज ही नहीं था, सीधा एग्जाम. Next year I wanted to go to RDC because my unit said you have to represent. तो वहाँ से शुरुआत 1 year completely RDC. And I was chosen as the best cadet of Andhra Pradesh, parade commander. Delhi गई थी. Got chosen to represent the country at 26 जनवरी को. 26 January को. So पूरा January you have to be here. हाँ practice and everything. हाँ parade में था. So then that was beautiful experience. I would always say that every child should be given that opportunity to be there in NCC, Then only they know the hardships of life and they know to bounce back. टेंट में रहते हैं, कुछ नहीं मिलता. सुबह को 3 बजे उठ के ठंडगी में नहाना पड़ता है. बैरक्स नहीं रहेगा. पानी को ऐसे डाल के वैसे डाल के create. I should say that NCC में you can survive anywhere in the world. Anywhere in the world, seriously. So that's how tough we were made. So यहाँ से वो हुआ, then got chosen to represent the country at Canada for youth exchange 6 months के लिए. So proud because only 11 girls get chosen in the whole country to go there. Okay. And it was a great pride. Parents were extremely happy. And June, May, that is 92. Oh my God, I'm telling my age. We'll cut this. That's okay. I mean, you should know age is just a number. So 92, we're supposed to go to Canada. And in the month of May, we were supposed to report at Delhi, where the Prime Minister and President and all will host you, and they will say bye-bye and all that stuff. So I was so excited. घर वालों को जाके बोलना था because anybody has ever done something like this in the family. So everybody, it's a town. So Ramanathapuram says somebody is like, doing all this. I mean, it was a pride and for going everybody. all the way to Canada. Yeah. So Pehla passport and all that was so good. Passport was another story, but if I go on, it'll go for hours. So that way, then shopping के लिए हम चेन्नई आए थे, सबको बाय बोलने के लिए चेन्नई आए थे हैदराबाद से. Bought everything, sat in an auto rickshaw. Topple हो गया, पूरा कट गया. अच्छा. हाँ. So I couldn't go to Canada. So I thought, okay, destiny's got something. उस समय थोड़ा लगा था कि इतना hard work होता है. It's not easy to get chosen. It's every day you work literally 20-22 hours. And क्यों ऐसा कर रहा है भगवान करके अक्सर दिल में आता था. But then there is something beyond that. So I just move. I just forget. That'll be there 5 minutes ऐसा. बस उठ के what next? Then what next was second year. I said ठीक है शायद मैं college जाऊँगी and all that. But then no. Parade command करना है पहली बार लड़की command करेगी and that too with a sword.
Wow. So they said Srimati only can do this. So my, contingent officer from my unit, they called me and they said, चलो आप ही को करना है. Super duper excited. मैंने sword पकड़ के march किया था. General K.V. Krishna Rao was the guest. So he came and he said, oh my God, I need details about this ladki. And he called for my father and he said, बहुत बढ़िया आपकी लड़की तो ना, ऐसे लड़की चाहिए हमें फौज में. ठीक है, क्या कर रही है? End of second year, so next year she'll complete her graduation and all that. ठीक है, complete करने दो, आने दो, we will get her direct entry. करते हैं. I will recommend. My dad was like, ooh, because he wanted to be in the armed forces and he couldn't be chosen and all that. And he's like, wow, And my dad pulled out my wedding invitation. And you were in your second year? End of second year, 18 saal. So my dad said, I mean, this makes me feel so proud that, I come from a village and from a very humble background, even though my daughter went to such a school and she did all this, we can reach here. So this is going to be a great inspiration for my family and generation. So I'm going to talk about this to my family members and all that. So he said, but everybody ripped my father out that day. इतनी छोटी उम्र में क्यों इसकी शादी की पड़ी है अभी? So, I mean, that's destiny. So, got married. So, सीधा sword से मैं वही बोलती हूँ, sword से तवे. किचन में सीधा किचन. हाँ, but जो भी करना है ना, मुझे अक्सर जो भी रोटी बनाती हूँ, it has to be the best shape. सब्जी बनाती हूँ, that has to be the best. अगर कुछ बोलना है, it has to be the best. It's not to impress somebody, but वो दिल से एक खुशी होती है कि good, आज आपको ये opportunity मिला, do your best. You've given your best. So that's how it was. 18 साल हम घर में बीते, but always हम चांद से बात कर रहे थे कि यार चांद हमारी पैदाशी क्यों हुई यार, नाम क्यों मुझे तमिल में श्री मतलब लक्ष्मी, मती मतलब मून. Okay. So, अरे यार, that's why maybe I like you. I'm coming. So she was my best friend. ऊपर जाती हूँ टेरेस में, सब बात करती हूँ and everything. And without the family's knowledge, कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि it's not like शादी हो गई and Mrs. केसन बन गई, बच्ची की माँ बन गई. I mean, वो तो natural है जिंदगी में. But you need to do something beyond for your birth. तो मैं सोच रही थी कि क्या करना है. So वहाँ पे थोड़े मैंने friends बनाना शुरू किया and all that. So I choreographed about 55 ram shows. Okay. My dad would say, "तो NCC में you would walk like a duck." नहीं, अभी तक मुझे लग रहा है कि अभी you're going in every direction. East कभी west कभी south कभी north. A woman is versatile. She can really do everything. I'm sure. So it is just that you need to feel what you want to do and where you want to go, right? So, and I have a daughter biologically. I want to be a real icon for her. Dunya ko chodo. For me, it was only because I was seeing her. So for me, when she grows up, I know that she needs to be a versatile person, a very humble, grounded person, but do everything. So uske liye मैं leader बनना चाहती थी, and I was doing all this. So I did, so 55 ram shows I choreographed without the knowledge of my family. And 6 ad films direct kiya, script kiya. And then voiceovers, I love lending voices. So documentaries and everything. 10 बजे से 2 बजे तक nobody's at home. So वो time ना मैं I had a kinetic Honda. Back के जाके I would do everything and come back. आज बहुत कम लोगों को पता होगा कि kinetic Honda या सन क्या होते थे ये. वो मेरा जिंदगी था. So I would come back and then जब स्कूल छूट जाएगी 3 बजे वापस घर में. And पूरा ऐसा करके नॉर्मल जैसे रहते हैं ना घर में. द टैग हाउस वाइफ मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल वो टैग, लेकिन वैसे आई यूज्ड टू बी देयर, तो किसी को पता नहीं चल रहा था. बाद में जब एक एड फिल्म किए थे तब एक जर्नलिस्ट दोस्त थे. ही सेड, यार तो इतना काम करती है, आई रियली वांट टू राइट अबाउट यू. आई सेड
तू लिखेगा बर्बाद जिंदगी, बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू कुछ भी नहीं करने का, किसी को पता बिकॉज नहीं मेरा सोल सेटिस्फैक्शन, मैंने जन्म लिया, इट्स नॉट फॉर नेम फेम मनी, नो, मेरा सोल शुड बी हैप्पी, Happy, right. you know, so my soul is happy, don't spoil that. He said nahi yaar nahi, people should know about like this because women needs a, I said yaar nahi yaar, I don't want. लेकिन क्या रे दोस्त कभी कभी ना ऐसे उटपटांग कामें कर लेते हैं. He wrote and मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स पूरे पढ़े, And it came in newspaper or magazine? मैगजीन, वो भी पॉपुलर मैगजीन. तो सब लोग पढ़े and they were like, Kissing, you never told your wife is so versatile. जाके उसी को. And I mean, see, उनको ना वो पैदाइशी से वो it is बताओ like, कैसा है वो? How was the reaction when he came to know about it? शाम को घर पे आए तो क्या क्या रिएक्शन क्या था? see the best part of him is वो कभी गुस्सा नहीं करता है, बहुत साइलेंट है वो. क्या बोलते हैं, the silence is the killer actually, to be honest. So silently सब कर रहे थे, oh and all that, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ ऐसा था माहौल. बट मेरे को मालूम कि उनके दोस्त उनको बोल दिए ऑलरेडी, तो कब बम फुटने वाला है, कब बम फुटने वाला है. आई वॉज वेटिंग एंड इट डिडंट हैपन. देन वेरी नेक्स्ट डे ही सेड, I mean, if you wanted to do something, you let me know and, you know, take care because, you know, in our families, we generally don't have all this, you know, ex-student, kuch kiya. So I was like, but then slowly I started thinking, कि, you know, it's not his mistake. इंडिया में जो भी आम आदमी है, उनके पैदाइशी, उनके जो परवरिश होती है, it's to say that the man has to work and earn, the woman has to take care of the house. So when you're like that, I mean, he's no different. I said, it's okay, चलो छोड़ते हैं. तो you had to give a huge gap. अभी 3 साल तो घर में फिर से बैठना पड़ा. So it was like that. तो ऐसे हो के finally, to cut this long story short, एक परी मुंबई से आई थी. She was the best cadet of Maharashtra contingent. NCC में. So we became a good friend. And she came to Chennai for a conference. And we were not in touch. So I went for that exhibition. It was an exhibition, travel exhibition. So my husband was a very gracious traveler. So हर साल so I would just point out this country, वो country जाते थे ऐसा मतलब. So that way it was very good. So I went for that. देखे तो this woman, tall, beautiful, you know, I mean, she was looking such a professional. You know, I was just looking at her with an awe. And she said, "Arey yaar, tu Andhra West cadet." And you know, we had a good talk. I said, "क्या कर रहे हैं?" हाँ, बहुत अच्छी तरह से पका रही हूँ. आ जाओ घर को खिलाते हैं. And all that. She said, इतनी लंबी चौड़ी बात की थी आपने? मैंने कहा, हाँ, किया था. हो जाएगा. So she said, ठीक है यार, मायामी चलो, एक कॉन्फ्रेंस है, कैसे भी कन्विंस कर लो तुम्हारे घर वालों को. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट वन, जस्ट गो देयर, लुक अराउंड, शायद कुछ आइडिया आएगा, आप आके फिर से करना. तो मायामी गई थी, मतलब जाने के 6 आवर्स पहले हमें परमिशन पूरे मिले थे घर से, घर वालों हाँ, सबसे पूरा. तो तब तक तो आपको पता है कि 18 इयर्स आप घर में हो एंड कम्युनिकेशन ज़्यादा होती नहीं है. आई वुड गो टू द इंटरनेट कैफ़े कि है DM में, मतलब ऐसी सी करी थी मैं, ईमेल्स भेजना एंड ऑल दैट, बिकॉज वो भी नहीं छोड़ना है. सो देन ऐसे जाके वहाँ पे आई वॉज टोटली लॉस्ट. मतलब इतनी बड़ी जगह थी, यू गोइंग एज अ प्रोफेशनल, यू नो, हॉलीडे दूसरी बात होती है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल व्हेन यू गो देयर, वो इंटरेक्शन जो होती है, व्हाई हैव यू कम, व्हाट हैव यू कम, ब्लैंक. सो इट वाज जस्ट दैट आई वांटेड टू अब्जॉर्ब एवरीथिंग. यू नो, इतने साल जो पीछे पड़ गए थे, आई सेड यू नीड टू रन फास्ट नाउ. सो आई गॉट टू सी एवरीथिंग. तो मेरा पूरा ध्यान और इंटरेस्ट नासा बूथ में गया. नासा मायामी, नासा का बड़ा सा बूथ था. देयर वर एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट, एवरीबडी देयर टॉकिंग अबाउट कि वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या करते हैं, बच्चों के लिए क्या करते हैं, एंड फिलहाल लॉन्चेस क्या करते हैं. It was spinning to me because as an Indian kid, you know, for us NASA is something huge. So I was like, I didn't know I would really be standing in front of
these people who are like gods. So just like that everything happened. And 2 दिन थे वहाँ पे, 2 दिन मैं उन्हीं के पीछे भाग रही थी। नासा के स्टॉप पे ही थे आप? हाँ, उन्हीं के पीछे पड़ रही थी। और मैं सोचा कि ओके, वहाँ पे ना उन्होंने कहा कि बच्चों के लेके आ सकते हैं आप, एंड यहाँ पे स्पेस कैंप्स होता है, फ्रॉम 7 years old you can bring children. That hit me hard. I said, okay, चांद, अभी आपने आपका काम कर लिया मेरा बुलावा हो गया, चलो शुरुआत। तो फ्रॉम देयर, नो लुकिंग बैक, आई केम टू चेन्नई। थोड़ा कॉन्फिडेंस बना लिया, थोड़ा थोड़ा बात करना सीखा घर में, नॉन वायलेंस, एंड बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एंड वहाँ पे शुरू किया स्पेस किड्स इंडिया। सो स्पेस किड्स इंडिया में पहली बार So this idea came from visiting Miami. Yes. After going through Yes. NASA, you started Yes. Space Kids India. बिकॉज आई थॉट स्पेस का जो एडुकेशन है यहाँ पे कमी है। मतलब हमको कुछ भी आता नहीं था, वी जस्ट नो एस्ट्रोनॉट्स, वी नो कोई भी नासा। सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट नहीं है ना हमारे स्कूल्स के अंदर, कोई सब्जेक्ट नहीं है स्पेस करके। नहीं, इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब भी जाके आ रहा है नया नया, उसके पहले तो कुछ भी नहीं था। तो दिस वाज इन 2009, सो 2009 में कुछ भी नहीं था। सो मैंने सोचा ठीक है, ये करवा देते हैं। तो फर्स्ट आई थॉट ठीक है, हमारे बेटी को लेके जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी हु विल सेंड यू, मतलब इतना दूर जाना है, वीज़ा लेना है, बिजनेस तुमने किया ही नहीं तो तुम्हें क्या आता है, और कैसे तुमको ट्रस्ट करके ले इतने सारे बच्चे। बट फिर भी वहाँ पे कॉन्फिडेंस था कि चलो यार 108 बच्चे लेके जाएंगे First trip फर्स्ट ट्रिप में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, हाँ भगवान कर देगा। मायामी कोस्ट से उनको दिल्ली में एक काम था, सो आई वॉज इन टच विद देम कॉन्स्टेंटली। सो वो दिल्ली आए थे तो कह रहे थे कि चेन्नई कितनी दूर है, हम आएंगे चेन्नई। तो मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट। सो तब जाके मेरे सब बोलना पड़ा घर में कि आई वॉन्ट टू डू दिस एंड ऑल दैट, बिकॉज इफ आई एम इन्वाइटिंग देम। सो ओके, स्लोली दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो कॉन्फ्रेंस किए यहाँ पे, प्रिंसिपल्स एंड ऑल सबको बुला के, बट एवरीबडी इट वॉज सो न्यू कि द एक्सेप्टेंस वॉज नॉट देयर। कौन 1.25 लाख देगा देखे और अमेरिका भेजेगा नासा में, क्या और वो भी मिलेगा? छोटे से बच्चे को जिसको इतना समझ नहीं आएगा। हाँ, क्या मिलेगा? फर्स्ट थिंग इज, हमारे देश में ना कुछ 10 रुपया दिया तो 10 रुपये के लिए यूनिट हाथ में ये कब तो भी मिलना है। अगर ये नहीं मिलेगा तो भेजेंगे कुछ नहीं। मिलेगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग वेस्ट में ज्यादा लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो नहीं। सो इट वॉज वेरी न्यू। उसको तोड़ फोड़ करके कौंसिल जनरल को मैंने लिखा था कि यू नो आई वांट सर, वो रिस्पेक्टेड वो पूरा डाल के, लेकिन कैसे एक ऑफिशियल मेल लिखते हैं ना, पता नहीं था। सो आई जस्ट सेड, सर हमने स्पेस किड्स इंडिया शुरू किया, हम बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, हमको वीज़ास चाहिए, प्लीज़ आप वीज़ास पक्का देना। दिस इज हाउ आई रोट, वीज़ास पक्का देना आपको, एंड यू नो आई एम गारंटी। हु एम आई? No one to them. No one to the world. But still, I stand guarantee I will bring them back safely and all that. Everybody started mocking and they said, क्या शाने बनते हो कि you can draw it like that. I said, trial में क्या होती है? एक yes होता है, एक no होता है। वही जो आएगा। बस जो भी आना है उससे ऊपर करते हैं। So that's how it started. 45 minutes later, I get a call from the Consul General's office. And they said, he was so amused, his secretary spoke. He's so amused by the email. He said, I definitely want to meet this woman. So, वहाँ से शुरुआत, and 3,500 children, NASA, European Space Agency, and the Russian Space Agency. तीनों में, तीनों camps के लिए, woman, I was the ambassador for it from India. So, this was something huge. I can't fathom from where you started to where you are. And वहाँ पे then finally they awarded me from the US Economic Department, Washington DC में, कि you know you've done so good for the development of state of Florida. तब जाके मुझे hit हुआ कि oh my God, ये भी होता है। See, because you've not really worked on economics and everything. Oh, इसके पीछे इतनी economics होती है। I said नहीं, तो फिर हमें reverse engineering करना पड़ेगा। Let's get everything in India. चलो शुरू करते हैं। So that's where I said, इतना youth population बोलते हैं, what are we doing with the youth population? Let's start building satellites. जब दुनिया को सुनना है तुम्हारी बात, तो कुछ
बड़ा बनाना है. छोटे मोटे काम तो सब करते रहते हैं. Do something like this. Handpicked young children, built satellites. That's a huge story. Now anyway, we won't dive into it. कुछ बड़ा बनाना है. That was the thought. So हमने handpick किया है Tier 2, Tier 3 towns से बच्चों को जो 8वीं 9वीं कक्षा पढ़ रहे थे. Brought them in and we started building satellites. Prelude नहीं था, कुछ भी नहीं था. 2015 में हमारा पहला balloon sat गया था. With so many challenges because sensors भी नहीं मिलते थे इतना इंडिया में. So we had to look around, import duties, पैसे कहाँ से? Because nobody will support you, fund you and all that. I mean, if you speak about challenges, दुनिया भर के challenges हैं. But how you, how you really excel in breaking that is what I love to do. And that's how we started. And the one that you see in front of you, that's the world's lightest payload, the Kalamsat. And that went up on a NASA Stereo Orion rocket. ये दुनिया की हल्की सबकी हल्की है. And it was 3D printed. 2017 में गया था NASA के रॉकेट में. पहला Indian student built rocket, satellite. So वहाँ से पूरा turn होना शुरू हुआ. And people started noticing. उसके साथ भी आ जाएगा. अरे यार, she's not even a space engineer. She's not an engineer. How did she do this? Why is she doing this? So why is she doing this? Yes, of course, somebody needs to do it, and I'm doing it. That's how I answer it to people. So today, proudly, humbly, I wish to say, 27 space missions, only woman founder in the world with students. Education ने इसको कैसे support किया? Because you are not coming from a space background and you didn't studied engineering or any related thing to spacecraft. How does this, I would say, relevant education or irrelevant education that takes you from commerce to spacecraft, space engineering? A good question. You know what? Passion drives it all. You keep learning until your last breath. If you think you can do that, I don't need a graduation in spacecraft management or spacecraft building, but I need to have the knowledge to build a spacecraft. Who's stopping me from that? So I acquire knowledge. So जब जाती थी मैं NASA और ESA and all that, वहाँ पे जो engineers होते थे, explain करते थे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं. They take every effort to teach even a बच्चा. So that intrigued. मैं ना पूरा लिख के आती हूँ. घर में वापस आने के बाद पढ़ते रहती हूँ. क्या होता है, क्यूबसैट क्या होता है, ये सेंसर क्यों होती है, रेडिएशन काउंटर क्या होता है, IMU सेंसर्स क्या होता है. मतलब ऐसे पूरे चीज़ा मैं पढ़ के so that okay, something that little I can contribute. Cooking science and astronautical science, everything is a science. It's only the creativity that you need to have. क्या जुगाड़ कर सकते हो, that's very important. हमने वैसे ही जुगाड़ किया था. We did not have a lab. So हमने क्या किया, इसको बॉइलिंग टेस्ट, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया हीट टेस्ट के लिए. एक्सपैंड हो रहा है सैटेलाइट, कैसे हो रहा है एंड ऑल दैट. फ्रीज़र में लगा दिया, कोल्ड टेस्ट, हीट टू कोल्ड कैसे इसका ये हो रहा है. फैन में बांध के स्पिन टेस्ट कर लिया. सो मतलब सारा जुगाड़. एग्जैक्टली, इट्स अ सब ऑर्बिटल मिशन. मतलब सब ऑर्बिटल मतलब ऊपर जाके नीचे लेके आता है सैटेलाइट को, जो पेलोड होता है उसको. सो वी गो कलेक्टेड, मतलब अटलांटिक ओशन में गिरता है, फिशरमैन लेके आते हैं, उसके बाद हम इसको डिकोड करते हैं. सो वी वर एबल टू डू दैट. सो एवरीथिंग इज लर्निंग. Knowledge is different, graduation is different. When we came to know about this fact that women of your age is again going for an enrollment of DBA, so what made you search for it, ma'am? कि अभी इतना सारा काम है आपके पास में, you have a lot of work in your space gift. उसके बाद भी कैसे पॉसिबल हो पाता है कि इसके लिए टाइम निकालना फॉर ऑल दीज रिसर्च वर्क, थीसिस एंड ऑल? वो डॉक्टर श्रीमती जो बचपन से वो ख्वाहिश थी, वो अभी गया नहीं. एंड हमें तो ऑलरेडी डॉक्टरेट मिला था बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड एवरीथिंग. एंड द डे इट सो हैपेंड कि मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, पेमेंट कर रही हूँ फीस. I was awarded another doctorate on space diplomacy. That was fabulous. But जो भी हो, when you are awarded something, it is different. But मुझे ना पढ़ के मुझे लेना, मुझे earn करना है.
So that is why I thought I wanted to, definitely do this. And अभी जो हम critical एक mission में हैं, जहाँ पे हम 108 countries को जुड़ के 12,000 लड़कियों को एक अलग सा curriculum बना के उनको सिखा के we are building a spacecraft to the moon. Amazing, man. So my 22 hours I work because I need to speak to different countries and everything. On top of that, सब लोग बोल रहे हैं कि why do you want to take this? मैंने पहले, but one thing I have to really thank you is I told them that मुझे ना हर class attend नहीं हो पाती हूँ and all that stuff, but I want somebody to get a doctorate in space entrepreneurship. वो भी women's in space entrepreneurship. ये किसी ने अभी तक छुआ नहीं, देखा भी नहीं होगा, मैं सोचा भी नहीं होगा. हाँ, तो इसीलिए मुझे ऐसे डॉक्टरेट करके I wanted to tell other women कि आप एज बोलते हो, नहीं बोलना चाहिए. एज बोलते हो, बहुत सारे why? On a funny note, because when you grow older, the amount of maturity you get, the way you handle stuff is very beautiful. जब बच्चे लड़कियां होते हैं, we're more fashion conscious and we want to look beautiful. We want people to say, oh wow, that way. But as you grow, it's like old wine. You really want to be so good with what you do. You want to be known for the work that you do. And PhD, वो जो बचपन का वो डॉक्टरेट का था ना, तो ऐसे नहीं, पढ़ के ही लेना है. And you need to be an inspiration for many. And उसके अलावा हम एक स्टैंडअलोन यूनिवर्सिटी, स्पेस यूनिवर्सिटी मैं 7 साल से प्लान कर रही हूँ. बिकॉज ये जो नासा का वो था, वापस आके मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग जो बता रही थी मैं, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2 बार. एंड तब उनको प्रेजेंटेशन भी दिया मैंने कि वी नीड टू हैव अ स्पेस रिसर्च पार्क. वहाँ पे इट शुडंट बी दैट वी हैव कंपनीज और स्टार्टअप्स, ऐसा नहीं. We need to have like a miniature version of NASA, जहाँ पे अपने देश के लास्ट बच्चे तक can go there, feel the simulators and everything. So everything comes from seeing. Seeing is believing. Yeah. So we need to build something like that. So Vasundhara Raje ji राजस्थान में जब वो CM थे, उनको presentation दिया. She read about us ये कलाम साठ के बाद. उन्होंने हमें state respect के साथ बुलाया था, red carpet. And she said, इसका सिटीजनशिप तमिलनाडु से बदला दो, आधार कार्ड बदला दो, राजस्थान बना दो. आप यहीं पर होगे, you got to do this here. She was so sweet. And of course ये politically changes तो होते रहता है. So वो change होने के बाद अभी हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं कि कहाँ पे बनाएंगे ये. So अगर ये बन गया, then you need more people, more professors in this particular. Because अभी mechanical, engineering, electronics, ये सारा चीज़ space में utilize होता है. For every satellite that you build, you need all these engineers. For rocket, you need all these engineers. But there is no special study for this. Aerospace is a very generic term. So हम एक standalone university, International Space University France में है. But उसे हम कैसे यहाँ पे Indian ecosystem में इसको कैसे बदला जाए. So all these things, I thought we need to have more people. And yours is of course online. That's the biggest plus point I have to tell you, because pressure नहीं बढ़ता है कि हमें college जाना है and you have to take classes and all that. फिलहाल तो जाते रहते हैं colleges and all that. But इसके लिए जाना है करके it is very difficult. So that way I have to really thank you. It just came because मैं 2 साल से सोच रही थी मुझे करना है, but somehow it didn't work. But this came in like a real boon. Thank you so much for that. Any advisory for all the women who are married and not able to study now that studies are online and are available 24/7 every part of the world and with affordability and accessibility? So what's one piece of advice would you like to give all the females across the world, I would say now? Education is something so different, as I mentioned earlier. Acquiring knowledge is very important until your last breath. You don't need to showcase degrees everywhere, right? But what harm
when you learn something more and new, right? Because there are a lot of people, they start their life at 60s and 70s and, so on. Well said, ma'am. So why do you have to think that once you cross 40, majorly for women, once they cross 40, 45, 50, physiological changes happen, menopause happens. So mentally, a lot of things changes. So what happens is they get into depressions very easily, and children get married or children go abroad. Husband is busy with his midlife crisis and his business and everything. So you are just left out. So I think education is the best thing that can happen to you. And when it is coming affordable and online, why not? Grab it. You have to grab it. And there is nothing that you have to take a science stream, continue science stream. No, you could do something. You could do law. In fact, I had actually from your institution only, I had applied for law also. Okay. Because my kids were doing law. They were doing their post-graduation. So I said, I will also do with you guys because we need to have space law because there are a lot of policies that needs to be built around space, Governance and compliance. Yes, everything. So I thought, okay, let me do that also. And so is this, please, pehle PhD khatam kar lo, baad mein do this. But I think that's how women need to be. Ek hi zindagi hai. Let's make the most of it. Let's be happy, Cherish every moment. Because बाहर जाएंगे, there is challenge. गिरोगे, उठोगे, भागना ही है. So that's life. I mean, पैसा है, पैसा नहीं है. दिल एक है, दिमाग एक है, हाथ पैर है. चलो, चलते रहो. I would like to know your experience right from the starting, from searching for DBA and till today. I would not say the half race is done. It's only 10-20% has been done. But how was your experience, ma'am? It's been beautiful because the inaugural was the classes. one who helped. Yes, the inaugural classes. I was sitting in a launch, and Taru kept messaging me, "Ma'am, आपका class है, login करो." I told him, "ठीक है, मैं करता हूँ." So I logged in, and I was sitting in a launch, and I was doing TikTok with both. But I think this is a great support system for women, I should say, even for men, because so many aspirants are there who want to do post-graduation, doctorate, because some people for government jobs and all that, if they do a master's, they get a tarakki, they get promotions, pay and scale may pay rise, scale may rise. So this is very helpful, and everybody is considering this now. Initially, online graduation and all that, people wouldn't take it seriously, and they wouldn't take it into consideration also. But abhi, it is a boon, I should say. You can work and you can study at the same time. So that way, personally for me, big boom, I have to tell you, So I think we had 7 sessions until now, and beautiful sessions, Saturday and Sunday, so weekends. So that way, weekends are the most busiest part, but still that's on, and you become a student. See, that's the best part, You want to be sincere and you want to take everything, and whatever be your age, but still when a teacher is teaching, a teacher is a teacher. So No matter that what way, your age is, no yes, matter what your so that way I feel like, oh my God, today I have a class. And it's fantasy also, when I tell it around to my kids, it's like, "Aap crazy ho," and I'm like, yeah. I enjoy my craziness. I sit in the lab, उसको switch on my iPad में डाल देती हूँ, and यहाँ पे पूरा बात होते रहता है, वहाँ पे she'll be teaching, and it's nice. My next question would be, how was your experience in finding the right university for you? Because I guess you were clear enough with your course what you wanted to do, but from where you wanted to do, and how much would you rate that system of ours? I have to tell you 15 out of 10. Because the moment I mentioned I wanted to do a PhD, I get calls every day, and very politely they would say that, ki, "Ma'am, I know we are busy, I know you're busy, but still I just thought I'll give you ye website aap dekh lo, ye website, and we'll make sure." I said, "Dekho, mujhe na thesis karna hai. I will just do the final thesis and everything. Please help me get this. I was, certain categories मैंने बताया था कि I just needed this, so please support करो."
So sweet. They went on to check which are the universities and what is the scholarships. Ma'am, aap diyo aapka profile, we'll get you scholarships also. I said, wow, that sounds good, because you tend to become a student and you really enjoy that whole thing, you know. And they were so meticulous. सुबह मेरे को perfectly message आता था, ma'am, we won't call you, but we will send you a message. Please look at this website. So that was very, very helpful for me. And not only that, I have to tell you, हमारे बच्चे, they have done their post-graduation in law from College Vidya, from Jindal University. So that was a good thing, because आपका process बहुत अच्छा था. And I could see children, you know, with their sessions and everything. So that gave me a double confidence that, you know, I can go straight away with you all, you know. And very honestly speaking, मैंने किसी website किसी को नहीं देखा था. Straight away I said I will go with College Vidya. You give me the options, and that's how I got enrolled. Ma'am, I will admit this fact. When I went through your profile, the next question I asked Zoya, why she wanted to study. 5 pages profile she already have. Actually, I was surprised and I was shocked. He's going for a studies at this age and with this profile. People are there who wanted to do these courses. They do not want to leave learning behind. And the best part which I have learned today is, at this age, being a student is another feeling. Yes, Yeah. yes. So it is that special feeling कि after my daughter's wedding, मैं ना हार्वर्ड जाना चाहती थी पढ़ने के लिए. I wanted to experience campus. मैं पहले ही आपको कह रही थी कि I didn't go to college at all. बस final exam जाके लिखते थे and that's all. So वो experience करना था मुझे. And again, campus जाने का experience करना था. But that's been pushed. मैंने सोचा कि okay, let that happen when it happens. उसके पहले let's get this actual doctorate कर देते हैं. So that's why I wanted to enroll. And I think मेरे जैसे बहुत लोग हैं, when they come to 50s, you know, they're almost done with their children wedding and everything. And the next thing is gardening करते हैं, stitching करते हैं, and all those stuff. But I think you have to consider and you have to think about skilling yourself, upskilling rather, and you have to keep studying. That's what I say. You know, once a student, forever a student. And the excitement and the twinkle in the eye you get when you say you're a student of a university, that's a fabulous feel. And I think that should be there with everybody around in this age group. एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें